Kargil War start hela kotu. I mean, trigger kotu heitila, and then how India reacted. Everybody knows about Lieutenant Vikram Batra, PVC. So that was a cliff which was almost unclimbable, but they climbed and they did it. So Pakistan never expected कि इस wall से कभी कोई आ सकता है, but think that हम कर सकते हैं, we did that. So Kargil War ଉପରେ ବହୁତ କମ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଅବାଉଟ୍ ମାନେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା. ଆମେ ସବୁବେଳେ ମୁଭିରେ ଡିପିକ୍ସନ୍ସ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଶେରଶାହ ହେଇଗଲା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଦେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଡିପିକ୍ସନ୍ସରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତିକି ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଜେନ୍ଜି କହିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ 97 ପରେ ଯେଉଁମାନେ. ତ ମାନେ କାର୍ଗିଲ ୱାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କୋଉଠୁ, ଆଇ ମିନ୍ trigger kotu heitila, and then how India reacted. So there is an unsaid rule between India and Pakistan setole thila ebe mu janni. So during that time, during peak winters, 16,000 17,000 feet above jo sabu post achi, we vacate it. That is called winter vacated posts. To sei sabu post e semane bhi chhad diyantu au ame bhi bahari jao. So that is how an unsaid rule ki bhai tum bhi nahi jao, hum bhi nahi jao, because it is acute winters, peak winters. Life at that point is minus 30 degree, minus 40 degree. Survival is very difficult. So during 99, आमे vacate कर देथलु. But what happened during May? So Pakistani army as militants, they infiltrated, se possible, and they wanted to occupy the posts which were vacant, armor post, which were vacant. So जो लोकल शेफर्ड से मैंने चौरोया पे जाऊले इन दी कारगिल बटालिक सेक्टर, तो से मैंने देखी ले कि ये कौन जा रहा है, क्या हो रहा है. देन दे इन्फॉर्म्ड एंड देन द एंटायर प्रोग्रेस हैपेंड कि कौन पाए ऊंची. सो वी इट इज डिपिक्टेड इन शेरशाह मूवी ऑल्सो एंड इट इज शोन इन लक्ष्य मूवी ऑल्सो कि ये कहाँ से आया और सेटा कौन हला को पटे से मैंने इन्फिल्ट्रेट कर ले, कौन पाए कर ले. तो से मैंने इंडिया रो पोस्ट को बेसिकली मैंने capture kariya pai. So it is not just India post, it was a post of strategic importance. Because what happens at 16,000 18,000 feet is you get a direct access to the highways. So they wanted to cut off India and Kashmir indirectly कि से माने जो गोटे आमर हाईवे अछि ताकू भांगी देबे किंबा ताकू डायरेक्ट एक्सेस नहीं जिबे. सो देयर वुड बी नो मूवमेंट ऑफ मैन वेहिकल, किछि मूवमेंट रहि सप्लाइज वगैरह जाई परिबो, किछि जाई परिबोनी. सो दैट पॉइंट वुड हैव बीन कट ऑफ. से माने टॉप रे रहिले दे विल गेट एन एडवांटेज. हां, सो दैट वाज देयर मेन ऑब्जेक्टिव कि से माने सेटा कैप्चर कर देबे टाइगर हिल की 0.4875 की 0.5041. सो ताकू कैप्चर कर देले त वी आर एट सुपीरियर पोजीशन, सो वी विल डू व्हाटएवर वी वांट. So that was the idea of them doing all of that capture. Then तापरे Indian army केमती respond कला दागो. So Indian army was like, we are always prepared. Of preparedness हमारा always था. We have a special team in every unit which is the Ghatak platoon, and we also have a high altitude warfare school in Sonmarg and Gulmarg who deal with high altitude training. तो that is always there. Round the year हमारा training चलता है. So like we are blessed to be born in a country which produces such heroes who are 24/7 ready. तो जेमती हमको information मिलिला, so we did a recce. हमारा सेठी कार जो brigade थला, सेठी कार division थला, they did an initial recce कि कौन अछि. तो visit रेकी इज रिकॉग्नाइजेंस कि कौन अछि, को लोक अछंती, व्हाट हथियार डू दे हैव, केते लोक अछंती. अकॉर्डिंगली वी विल सेंड आवर टीम, केते लोककर टीम पठेबा. सो जेंती देखिले वी कुड फाइंड आउट कि ये पॉइंट कैप्चर हुआ है, सही पॉइंट कैप्चर हला. देन सो देयर इज दिस कांसेप्ट ऑफ वॉर रूम. सो वेयर सीनियर ऑफिसर्स सिट, दे मेक अ प्लान कि को पटे असॉल्ट करिया, को पटे हमें डिफेंड करिया, को पटे करिवा. जेमती लक्ष्य रे भी देखुथिबो कि they sit in a table, they sit in a closed room where which is top secret, and they plan the line of action. It is conveyed to the top officers also कि कौन करिबा, which is this if this decision is okay or not. And तापरे the decision is taken
कि को दिन अटैक हबो को दिन आमे मूवमेंट करिबा that is all planned and then the action is taken. ଯେମିତି କି we'll go to the Kargil War, but ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲା high altitude training centers ଅଛି, so ସେ କେମିତି ମାନେ prepare କେମିତି କରନ୍ତି soldiers ମାନଙ୍କୁ? So high altitude warfare school, which we commonly refer as HAWS, is based at two locations. One is Gulmarg and one is Sonmarg. Gulmarg is the winter training, Sonmarg is the summer training. Summer training रे आमे rock climbing करू, we do the ice craft also, and Gulmarg रे we do the ski training. So it is not just mountaineering, but it is mountaineering with assault. So because we are not going for as a tourist. आमे rock climbing एक पे करू ना, that it's a passion, but it is a purpose. तो आमे rock, like we go with rifles, we go with weights, we go with all the accessories जहाँ हमको दरकार. We climb the rock, then we prepare for assault, and we prepare जहाँ हमारा bunkers थिबो कि तांको defend करियार अछि. HAWS also teaches us about survival skills, because if you are stuck at some place, को जगह रे रहिबो, को जगह रे करिबो, निजर घर बनैबो, निजर preparedness रहिबो, खाइबा को हिसाब रे रहिबो, because the ration is limited, and at that location logistics is a nightmare. जे आमर सर्विस कोर रे थिबे, आर्मी सर्विस कोर रे थिबे, फॉर देम इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क ड्यूरिंग 99 माने ड्यूरिंग एबे तो बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट न करेक्ट, बहुत लॉजिस्टिकल भी एडवांसमेंट्स हेइची दैट वी आर नाउ वेरी वेल प्लेस्ड, लाइक 25 years हैव ऑलरेडी लैप्स्ड. तो सेते बडे हॉज वाज गिविंग अस द ट्रेनिंग, एंड देयर इज माने गोटे मु एस्पेक्ट एटा भी कहि पारि, बिकॉज़ आई एम अ हॉज ट्रेन्ड ऑफिसर. So during my attachment at 8 Galwal Rifles, so my unit had a vacancy of basic mountaineering course at Army or ye HAWS. So I approached my CEO कि sir, I really want to do this course because I am a JAG officer, मेरे को कभी मौका नहीं मिलेगा, and this would be a life changing experience because I would go into a different setup altogether. So आपण summer training करथिले ना? मु summer training करथिली. So I did the summer training at Sonmarg. So that is a 42, I think 32 or 42 day course without break. So that is a life-changing course because what you learn there, सेठी कोन जहाँ सिखिबो, is no joke. Because with running at that altitude with battle load, कितने altitude था सेठी? 11,000 12,000 feet. Because at war zone you don't know 16,000 thibo ki 18,000 thibo, so they train you accordingly. तो हमको rock craft देले, ice craft देले, we have to climb on ice, we have to climb on rock climbing अछि, ice climbing अछि. तो all of that equipment कौन यूज करियार अछि कौन नाही, survival skills, तापरे logistics केमती चाहिबो, and the main important thing is your team. If you are not without your team, a solo person केमती survive करियो, केमती करिबो, से सब जिनस ट्रेनिंग मिलला. आउ बेसिक जेमती हमरो आमे नॉर्मल जेमती इठी रहउछंती, आउ हाई एल्टीट्यूड रे नॉर्मल जो लाइफ ता सेटा केमती डिफरेंट है? See, it is very difficult. जेमती लो ऑक्सीजन है. हाँ, correct. So it is, number one, the oxygen is very low. Number two, the services that you find in a city, से सब न थाए, तो लोको भी न थांती, and you have a limited, if I am talking about a winter cut-off post, विंटर कट ऑफ पोस्ट रे मैक्सिमम 15 के 18 लोक थिबे. सेथरे हमर लाइक सपोर्टिंग स्टाफ भी थिबे, से माने कुक थिबे कि अलगा लोक थिबे, सपोर्टिंग स्टाफ भी थिबे. तो आउट ऑफ दैट 15-18 पीपल, 2-3 वुड ऑलवेज बी एंगेज्ड इन सम अदर एक्टिविटीज. तो सेही 15-18 लोकंकर भितरे स्पेंडिंग 4 months 5 months 6 months रोटेशन भितरे तो इज अ डिफिकल्ट टास्क. But the like तुमको मोरल एते हाई करियर अछि in that small group, extreme conditions. हाँ, in that extreme conditions, because winter is acute, summer रे भी winter is acute. Winter तो it's a different ball game altogether. It's not just winter, it's not just the sita, but it's also this खाइबा नहीं, राशन नहीं, पानी is a problem. So all of those hardships are being taken care of the service corps, but you have to be trained accordingly. Summer camp रे कितने temperature था सेठी?
normal temperature. It's not कि बहुत extreme temperature था. We also go to higher altitudes for training, but that is basically so. At summer camp, at the course, it's not a summer camp. Summer course. At the course, what we do is we train at different situation. कौन हबो कौन नहीं. But when we go to high altitude, there is also a concept of PIT, which is a pre-induction training. So anywhere you go, at whatever location, it could be Rajasthan, it could be amara Calcutta pakhare gote location achi, which is a marshy land. Seithi bhi, if you go to Siachen also, there is a pre-induction training, which is a PIT, which is necessary for every individual or every unit which goes there. So that is a 2-week orientation program. So what happens is, say program re you get to know ki ei jo mu jauchi ei terrain ta ko bhale achi, what enemy, like what opposition do I have, what encounters do I need to take care of. I am sure Jammu Kashmir re ja sabu hochi, they also do undergo a PIT. So a PIT jemti mu kahuchi, training never stops. Whatever stage you are, whatever unit you are posted in, either in field or peace, your training never stops. Then ite hegala amara horse bisare. Then definitely ଯେତେବେଳେ information ଆସିଲା कि माने धीरे धीरे से माने कब्जा करछंती बा इनफिल्ट्रेट करूछंती आम पोस्ट को. देन डेफिनेटली वार रूम हेइथिबो तापरे. देन इंडिया को कितना टाइम लगेगा टू गेट बैक टू दिस? See, I am not sure about the timeline, but जेपे information मिलला, we check the information of authentic अच्छी ना नहीं, then we react accordingly. Because एमती बहुत information हमको मिले intelligence through कि raw through, which are true or which may not be true. But on the veracity of information, we acted swiftly. Like I think I'm sure जितने swift है पारे, because the units were moved at these different locations. जोठी जहाँ unit थिबार थेला तांको सेठी पठा हैला. Then a sub unit level रे भी discussion हैला कि कोठी को पटे alpha company जीवो, को पटे Charlie company जीवो, headquarter company कोट रहेगो. So all of that discussion was happening as the progression was there. Okay. So location wise भी and events wise भी टिके बताइए कि जेमती लोकेशन वाइज कि को पर्टिकुलर माने इंडिया पे कौन एडवांटेज थिला बा पाकिस्तान पे कौन एडवांटेज थिला, लोकेशन वाइज एडवांटेजेस कौन थिला, प्लस ता से तो विल गो इवेंट बाय इवेंट कि माने ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मते कहि दंतो कि केते दिन पाखा के चलथिला वार अराउंड I think mostly more than 2 months. It started in May, June, July. Because we celebrate Vijay Diwas on 26th July. तो May, June, July पाखापाखी माने 3 मास धर दियो, 2.5-3 months पाखापाखी चलछि. Okay, so event by event तो जीवा. then तापरे तापुरु बस मते geographical advantages कौन दिला दी जणो पे? Geographical advantage was with Pakistan, because they were at the high altitude posts. So when you are at when you are at a altitude high, when you gain altitude, automatically you have the field of view tomorrow broaden ही जाए. अब हमारा disadvantage थिला that there was nothing on ground which we can take cover of. जेमती बहुत जगह थिला पूरा barren थिला, किछि cover न थिला. So that was one disadvantage with us. But the big advantage that Indian Army in general has, that the morale was very high. And the security feeling that पहले भी हुआ हुआ है, अभी भी होगा. That we have been undefeated and we will progress as undefeated. That's the concept that we work in. And we have trained. We are being trained through our academy days. Ki the more you train in war, the less you beat. The more you train in field, the less you bleed in the war. तो से हिसाब रे हमें चलचु, because our training is superior to all armies across the world. तो से हिसाब रे that superiority feeling was always there. That was a big advantage for us.
ओके सो एते टाइम जाए चलिला जंती कि इंडिया रो डिसएडवांटेज थिला कि से माने पीक रे थिले हम पाखरे कवर नथिला Correct. आमे आमको सेमती किछि बेसी and एडवांटेज the that the disadvantage with us was that we did not know kette loko achanti, what weapons do they have. For that we did an extensive recce, बहुत थोड़ा recce करिया पड़ला कि को weapon अछि तांको पाखरे, because then only we can know कि को situation रे अछु आमे कोन हमको दरकार and what preparedness do we need to have. So that was also there. Okay, then किसी specific events जोड़ा आपन को लागे कि that plays a major factor. कौन events थिला event wise टिके जीवा. So there were 5 or 6 notable events which broadly define the Kargil War that we know it. There is one everybody knows about Lieutenant Vikram Batra, PVC. So tankara 0.4875 he had already captured that. So they had captured 0.4875 through cliff chop assault. So there was a cliff which was almost unclimbable, but they climbed and they did it. So say cliff ta actually it was a 90-degree wall. हाँ. So Pakistan never expected कि इस wall से कभी कोई आ सकता है. But because of our training, because of our high morale, because of the thing that हम कर सकते हैं, we did that. And we did that successfully. 0.5140 or 0.5170 कोटा जो second थला, that again was a difficult. So what the points that we are talking about, these are all heights. These are all relative heights in meters. When you convert it into feet, it is all 16,000 above. So at 16,000 above, fighting or climbing itself is a very big task. Be it in a July month, July 6th, 7th रे हेतला सब किछि, the major fights. So even during July itself is very tough, but we successfully did that. Tiger Hill is also one important aspect. Tiger Hill रे आमर थिले Grenadier Balwinder Singh. He did that. Grenadier Balwinder Singh Balwant Singh. He was only 19 years old. So he was the youngest in the entire platoon. In the platoon who did that and did that successfully. Okay, then आपण को जेमती notable events गुडा अछि. तो फर्स्ट तो गोटे हेगला जेमती हमें देखि जंदी मूवीज रे भी कि हमें से 90-degree cliff टा को क्लाइम करले, देन तापरे we captured that point. Then तापरे there was another highest point जोड़ा को कैप्चर करा गला. So is there the 2 points जोड़ा को कैप्चर कला पर the war is so सेइथरे भी नहीं, it is not, it is just one event out of the many events that were taking place in that war. जेमती Captain Anuj Nair was also there. He was part of the 5140 point. सेइथरे he was part of Charlie company of 13 Jackraff, and our Lieutenant Vikram Batra was Delta company commander of 13 Jackraff. So he did from one side and Vikram Batra did from the other side. So both of them, it is a matter of fact, it is a conglomeration. Sabu efforts joint है कि, and so हमें conclude केमती कॉले कि the war is finally over. So when we मु गोटे रेफरेंस दे दोची, as per as the basic audience knows कि आमे देखिछन दुईटा जगह मूवी रे आमे देखिछन कि दुईटा पॉइंट थिला, दुईटा आमे कैप्चर कर, and then we won. Right. नहीं, so it is just one aspect जो थोड़ा हमें cover कर लूँ. So there are different aspects also. There are different heroes of the war also who did other notable peaks and who did other जेमती Tiger Hill अच्छी, जेमती आमर I need to check अलगा points भी अच्छी, where other officers, other jawans also did acts of bravery, and then we could capture those points. So it's a combined operation. Exactly, it's a combined effort, it's a combined operation. जो भी point हमें capture कर लो, we reported it to the headquarters, then we made sure कि अच्छा ये point अच्छी, we have recaptured them all. That is when it was declared that now the war is over. And when they retreated, when the Pakistani army retreated,
then we got to know that we are in a good position and we are winning the war. Okay. So मते एक्जाक्टली जाना नहीं. आई थिंक दिस इज कारगिल वॉर जो थरे हम टैंक्स रो भी बहुत किस्सा अछि कि एते हाइट जाए टैंक्स गुडा जाइथिला, एते हाइट जाए टैंक्स जाइथिला. देन द एयर फोर्स आल्सो प्लेड अ वेरी इंपोर्टेंट रोल. एयर फोर्स रो एते लोको सुनु नाती या विषय बट एयर फोर्स हैड आल्सो डिक्लेयर्ड एन ऑपरेशन. तांको ऑपरेशन ना थिला Operation Shakti, if I am not wrong, but I'll check on that. Even they played, because operating at 16,000 feet for an aircraft is again a very difficult task. But they did that and they did that successfully. तो मेजरली जमती कि आमे देखंती कारगिल वार रे आपणकर जमती टैंक विषय आमे बहुत शुनिछंती कि टैंक एते हाइट को जाइतिला. So माने we basically push our limits बहुत बेसी to माने जमती भगेवा पई दांको आमे निजर बहुत लिमिट पुश करछंती. आ कुछ नोटेबल इवेंट जोडा हाइलाइटेड इवेंट जोडा अपन कवर करिया कुछ कारगिल लो जेमती the biggest tagline which any army, like any Indian would relate to is ye dil maange more. When he captured .4875, which is like which has been stamped in the Indian history ki ye dil mange more. So that concept, I think every individual should relate to his or her personal life ki ye dil mange more bhai, matlab don't settle for anything. Jemti amaro OnePlus ro bhi achi, never settle. You should not settle for anything less. Ye dil always mange more. So that is how we should always believe in a life. Okay, so let's talk about the heroes. So first is commander, I think Captain Vikram Batra, right? Lieutenant Vikram Batra. Vikram Batra. तो पर्सनली आपण भी काफी इंस्पायर होती है. सो एज समबडी कि आपण आर्मी रे ऑलरेडी 5 years, more than 5 years आपण थिले, तो गोटे नॉर्मल लोक मूवीज रे देखिबा पढ़िबा तांको विषय रे प्लस आपण जाइकी से लाइफ बंचिबा आ सेठू सिखिबा. तो टेल मी समथिंग अबाउट हिम. सी आपण को लाइफ रे केमती what generally happens is that when you are part of a forces which is extremely superior in the world, and when you hear stories about such acts of valor, so automatically you get inspired that bhai, I am part of that armed forces where Captain Anuj Nayyar, where Lieutenant Vikram Batra, where all of these heroes are born, and these are born in Indian soil, and they were commissioned into the Indian Army. So that plays a very different role, that your approach to life completely changes when you think about them ki ye at the age of 23-24 what they did is unbelievable. Because somebody, if a normal person, when I was 23-24 I was in college, I was like mu jani nathili ki kon achi kon nai, what is responsibility, what is patriotism, what is serving your motherland is. But such people, such officers, such jawans serving from 18 and laying down their lives is commendable. So every Indian should take inspiration from them, being in the armed forces or tame नथाओ, बहुत difference पड़े सेटा. आपणकर माने इंडियन आर्मी रे केमती आसिला, माने बेसिक बैकग्राउंड टिके ऑडियंस को कह दियंतु कि आपणकर स्कूलिंग देन तापरे कॉलेज वगैरह माने एजुकेशन वाइज आपणकर बैकग्राउंड, एंड देन व्हाट इज द इंस्पिरेशन इंडियन आर्मी रे जिबार कोठु आसिला. माने आपण नॉर्मली तो लॉ को प्रिफर करि पारथांते, एंड देन यू कैन बिकम a normal lawyer practice करिया, then but Indian army रे केमती. तो मोर जन्म कटक रे, मो स्टुअर्ट स्कूल रे 10th पर्यंत पढ़िली, जेमती नॉर्मल जो छुआ सेमती सब पढ़ती. मु भी नॉर्मल पाठ पढ़ा टिके कम, खेल रे टिके बेसी इंटरेस्ट देखैली.
तापर प्लस टू कॉमर्स आमर रेवेन्शा जूनियर कॉलेज रे करली 2 वर्ष गुली खटी रे पळेला हाँ 2 वर्ष गुली खटी रे पळेला नाली बिल्डिंग रे से बाइक चलेवा से खटी मारिवा से मुड़ी खाइबा टाइम पास करिवा तापर सिंस माय फैमिली इज इनटू लॉ माय बापा भी लॉयर अछंती माँ भी लॉयर अछंती तो मु कहली लॉ कर दबा विथ had like there was no aim technically in life कि ये करना है कि सही लाइन रे जीवा तो 5 वर्ष लॉ करली तो 5 वर्ष लॉ करिया मझी रे there was this I think 4th year रे दे पुष्पराज भाई हमर जणे सीनियर थिले he had passed out 5 years pass out करले he had applied for JAG तो सही टाइम रे that was around 2009 I believe 15-16 वर्ष ହେଇଗଲାଣି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଗୋଟେ JAG lawyer in the Indian army JAG ଟିକେ basically explain कर दियो ଲୋକମାନଙ୍କୁ JAG is Judge Advocate General is the legal wing of Indian Army. So Indian Army is a world in itself. We have engineers, we have doctors, we have signalmen, we have lawyers. So everything आमर भितरे ही चलछि. Indian Army रे जो cases हुए तार गोटे separate jurisdiction. Correct. So we have Army Act, Army rules. सेइथरे we are governed because discipline is of the paramount importance. So JAG officers deal with that aspect. We will come to that later. तो से विषय मते पचार माने कहिले कि JAG अछि जदि इंटरेस्टेड अछु तू देखि दे मु कहली हां भलो जिंस अछि लॉ भी अछि आर्मी भी अछि गोटे डिफरेंट लाइफ बिकॉज ना मोरो फैमिली रे ना मो आखो पाखो कि आर्मी रे थिले तो आई थॉट कि भाई ये तो गोटे भलो अपॉर्चुनिटी कि आर्मी देखि दबा क्यूरियस है कि क्यूरियस इट वाज जस्ट अ केस ऑफ क्यूरियोसिटी कि कोन अछि कोन नै आमे लक्ष्य देखथलु बट आई एम नॉट वेरी इंस्पायर्ड विथ लक्ष्य बिकॉज see that life did not relate to me मु ओकिलाती पढ़ी ची फैमिली लाइफ देखी ची ओकिलाती चलची तो then I watched शौर्य is a Hindi copy or Hindi remake very good Hindi remake of Few Good Men Tom Hanks रो तो आमर शौर्य is a Hindi version सेतरे थिले आमर राहुल बोस और जावेद जाफरी and Brigadier Pratap was played by मॉनसून वेडिंग रे केतला ब्रिगेडियर प्रताप मने पड़नी सो दैट गेव मी एन इनसाइट कि JAG ब्रांच कौन करे व्हाट इज द रोल इट वाज अ लिटिल मेलोड्रामेटिक सिंस इट वाज अ मूवी बट दैट गेव एन इनसाइट कि व्हाट इज एज अ रोल व्हाट इज JAG डिपार्टमेंट तो तापरे सरला मोर 5 वर्ष सरला तो बापा कहले प्रैक्टिस पे आस जा मु कहली ना प्रैक्टिस रे आसीबिनी I want to do masters तो मास्टर्स करला बेले I since I always wanted to join the JAG department मु वैकेंसी देखिली तांकर तो सेते बेले वैकेंसी नथिला so 2011 when I passed out after 5 years there was no vacancy of JAG department तो मु कहली this is a good opportunity मु मोरो मास्टर्स करी तो for that I went to Indian Law Institute Delhi रे मास्टर्स करली so 2011 रे आसना ने 2012 रे आसिला when I was in my second year of college तो I applied जेमती हमर नॉर्मल फॉर्म so we are exempted from CDS हमर एग्जाम न था because we are a specialized entry हमर ग्रेजुएशन मार्क्स देखंती आ हमर परसेंटेज देखंती and इंटरव्यू and direct SSB हां so it is a different concept altogether armed forces re entry is through SSB only SSB has 5-day thing सेतरे सब किछि थाए psychological test interview group discussion so that's a different concept altogether so when I was in my second year SSB asla moro mu gally I was like my SSB was in Bangalore 24 SSB Bangalore so Bangalore galu hame sabu they take care of your train tickets माने they compensate your train tickets for the first time तो सेठी हमर 5 दिन SSB हला मु क्लियर कर देली मेडिकल से गेला सब कुछ हे गेला व्हेन आई गॉट बैक टू दिल्ली मोर 4th सेमेस्टर चलथला मु कहली आ कोन मोर आर्मी हे गेला मु किछि करबिनी आ पाठ पढा छाड़ देली मु कहली मते आ दरकार नै LLM एंड देन आई थॉट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग माय LLM बट
my father said ki since you are almost there throughout the course, finish Complete it, kar do. complete it. तापरे January रे the like I was there for the March course, March of 2013. I was supposed to go to the academy. So January रे हमारा list बाहरला. List रे I was I think 11th in rank, and there were only 7 seats. So I did not make the list. I was shocked because जो November रे मोर SSB थिला, November, December, January, କିଛି ପଢାପଢି ହେଇନି I was in a different world because I felt that I have made it. clear ହେଇଗଲା. Sorry जो माने एबे तो पसी जिबा. ତ ପଢାପଢି ସେଇ ଟାଇମ ରେ ହେଇନି କିଛି ନାହିଁ. ପଢାପଢି ବି plus I was in a different zone कि ମୁଁ ତ ଏବେ army ଯିବି ଆଉ ମୋର ତ I am the chosen one. I am privileged. But when that did not happen, it was a shocker to me. मैं कहली अब क्या करें. तो धीरे धीरे I did my 4th semester with a heavy heart. 4th semester कर ली. But in the meantime, the good thing that I did, that was a blessing from above. December रे तांकर next batch ପାଇଁ form आस्ताला. December 2012. I filled that form. Luckily. तार call आसिला in June. For October batch. ସେତେବେଳେ ସରି ଯାଇଥିଲା. ସେତେବେଳେ ମୋର ମାଷ୍ଟର ସରି ଯାଇଥିଲା. ମୁଁ ମେରେ କଟକକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲି. ମେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା. ତ ମେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି କହିଲେ କି ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ, ମାଷ୍ଟର୍ସ ତ ସରିଗଲା, କମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟ ୟୋର୍ ଓନ୍ ୱାର୍କ. ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଗିଭ୍ ମି ସମ୍ ଟାଇମ୍, ଜୁଲାଇରେ ମୋର SSB ଅଛି, ଲେଟ୍ ମି ଗିଭ୍ ଆନାଦର ଶଟ୍. ଥରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଛି, ଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ହ୍ୟାପନ୍. तो तापरे आई मेट फ्यू पीपल. मु जानी नथली एते आर्म फोर्सेस कम्युनिटी आमर केते अछि केते नाही भुवनेश्वर रे. तो बापा जण को जानिथिले हु वाज इन 120 बिहार स्टेशन हेडक्वार्टर्स रे. तो से मते देखा करिले तांकू कहले तोर SSB तो हेतिला, यू हैड डन योर SSB, यू हैड क्लियर्ड योर SSB, व्हाट वेंट रॉन्ग. कहली सर एवरीथिंग वेंट फाइन एज पर मी. तो देन ही गेव मी फ्यू टिप्स कि व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग. लेट मी ट्राई. तो तापरे जुलाई रे जो बे मोर SSB आसला, इट वाज अलाहाबाद. एंड अलाहाबाद इज अ वेरी बिग सेंटर वेयर रिजेक्शन रेट इज प्रिटी हाई. अलाहाबाद कहउचंदी इज अ रिजेक्शन सेंटर. तो मु कहली आई वेंट विथ अ पॉजिटिव माइंडसेट कि मोर थरे हेची एंड लेट मी गो अगेन, लेट मी ट्राई माय लक आउट देयर. So July रे when I went out there, I went with a completely positive mindset. And luckily I cleared the SSB. Medicals रे भी सब clear हला. And all India rank मोरो 2 आसिला. And so that is how I got into the Armed Forces Academy. आमरो OTA Chennai Officers Training Academy Chennai रे October रे 2013 I entered. October 12th to be precise. So एटा थिला somehow भाग्य रे थिला सेटा. That is also your hard work. Yes, I would feel luck plays a very important role. तो मेनली जेतिकी मोर भी एबे जस्ट बिफोर द पॉडकास्ट हमें कथा होतले, मोर भी गोटे डिफरेंट परसेप्शन थिला कि जो माने फील्ड रे माने रुहंती लाइक आर्मर और आर्टिलरी, से माने सेमानकर ट्रेनिंग होतुओ, आ जो माने ऑफिस वाला स्पेस रे रुहंती सेमानकर दे जस्ट गो डायरेक्टली गो एंड प्लेस देयर. सो सेठी आपण कहले कि कंप्लीटली डिफरेंट हुए. सो वंस यू गेट इनटू दैट, तो तापरे समस्त आपण कहले ऑल द बेस्ट थिंग अबाउट आर्मी, यू कोटेड कि बेस्ट थिंग अबाउट आर्मी कि दैट ट्रीट्स एवरीवन इक्वली. तो तापरे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटी रे कोन माने केमती ट्रेनिंग. सो बी इट ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, बी इट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, और बी इट नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला, everybody is the same. If you join, you are a cadet. As a cadet, तुमको देखिबे, तुमको ट्रेन करिबे. You have to be trained. Whatever, if you are a JAG entry, if you are an engineer entry, only the doctors are exempted. Because doctors have a different role altogether to play in a warlike situation. तो सेमाने
ତାକୁ exempted ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ସେମ୍ ଥାଏ ସବୁ same ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ରେ କ'ଣ ଥାଏ ମାନେ ବେସିକାଲି ଜଣେ କଣ ନଥାଏ କ'ଣ ଥାଏ ତା ବିଷୟରେ so ଡିସ୍କସ୍ କରିବା off the record बहुत किछि थाए and on the record भी बहुत किछि थाए so as a normal civilian when you enter they have to make you equal कि because you go to a place where discipline is of paramount importance number one thing that they do is they shave off your hair so that everybody looks equal and this also has a role that तुमको हेयर स्टाइल करिया पय आ टाइम दरकार नै you are always ready so hairstyle is number one then uniform everybody wears the same set of dresses so we have different dresses for PT we have different dresses for games we have different dresses for classes we have different dresses for our a special dinner we have 15 16 17 more than that dresses and more than dresses we also have shoes matching according to the dresses so say set ta हमको धरे देबे that whenever you fall in हमर fall in गोटे हुए that everybody falls in a set pattern so everybody would look alike there is no difference that is the mental training that they do at the initial phase itself तापरे धीरे धीरे grooming हुए in terms of माने daily life माने if you are okay to share कौन थाए पूरा complete so as an officer you're not just expected to be physically fit but you're also expected to be mentally fit in mentally fit मु कहि परिबी तुमको पाठ भी दरकार आ साठ भी दरकार तो our morning used to start at 5 it could first instance could be a PT where a PT ustad would take our PT physical training हुआ or else it could be a drill ustad जो हमें drill करिबु either of the two things ता सरला परे कौन था usually माने PT तो हमें different so our PT is a very different concept of PT endurance था सेतरे strength था सेतरे हमें endurance रे because we have to run a lot our running रे it is a ମୁଁ गोटे छोटो एग्जांपल दोची which is a PPT हमारा टेस्ट हुए physical proficiency test सेतरे we have to run 2.4 kilometers in 9 minutes हाँ so if somebody runs in 9 minutes he is excellent if somebody runs between 9.1 second to 9.30 seconds he is good 9.30 to 10 minutes is average beyond 10 minutes is fail he has to go through that test again so that is one aspect of running तापरे push ups अछि sit ups अछि pull ups अछि toe touches अछि there are 5-6 daily केता time होए PT around morning so the intensity depends upon the situation time, duration now intensity जेंति हमरो initially because we were very fresh so the मु जहा कहूची PT is official PT unofficial PT अलगा थाए because as a cadet you are the junior most so what happens is you are at the bottom of the pyramid तम उपरे तम सीनियर अछंती तांका उपरे उस्ताद अछंती तांका उपरे प्लेटून कमांडर अछंती तांका उपरे कंपनी कमांडर अछंती तांका उपरे हमर ब्रिगेड कमांडर अछंती so there is a set hierarchy which trains you day in day out हाँ तो एटा मु ऑफिशियल चैनल रो कहूची हमर जो ऑफिशियल ट्रेनिंग है जे जो पीटी उस्ताद नियंती तापरे somebody who is weak is trained differently तार जहा वीकनेस अछि ताकू अलगा ट्रेनिंग दियंती it could be before your lunches after your classes सेटा तांकर हुए तो क्लासेस रे यूजुअली कोन सिखंदी माने टैक्टिकल नॉलेज वेपन विषय रे there is also military law there is also symbols there is lot of aspects जहाँ हमें day to day life रे हमें यूज करिया पे चाहूँ combat भी सिखंदी classes रे there are different places for that जेमती हमारा training हुए so we also do close quarter combat we also do firing से सब field activities थाए classes रे theory हिसाब रे हमें पाठ पढ़ू कि कौन अच्छी कौन नहीं what all equipments that we have
and how to use them, what all se sobo me माने even though you belong to house of law, still माने आपनको सब प्रकार ट्रेनिंग दिया जाए just to be prepared. So as I mentioned earlier, everybody is equal. So everybody is prepared for war, prepared for the worst. So हमको सब किछि सिखा जाए कि भाई ये सिचुएशन रे कोन अछि, को सिचुएशन कोन अछि, you have to know the technical know how. सेटा करिया पड़ियो माने in case किछि worst होछि बा unfavorable condition होछि, so that you are prepared. Even माने एटा बिलीव करा जाए if somebody is not prepared ताहले से अन्य जन को ऊपर बोझ होई जाए. करेक्ट. सो एटा भी गोटे ऑप्शन, एटा भी गोटे एस्पेक्ट अछि. तापरे आ गोटे एस्पेक्ट अछि दैट जो सब हमर सपोर्ट आर्म्स अछि, इवन दे गो फॉर अटैचमेंट ना. सो दे गो टू फील्ड इवन if they don't know the basic aspects of army, which is firing, which is survival, how would they survive for that 1.5-2 years? Jemti more भी attachment इतले 8 गढ़वाल राइफल्स सहित, and I was posted in Nimu. तो सेठी जो 18 मास आमे स्पेंड करिलु किबा जे भी करूची, how would they spend that time? So that is how everybody goes through that same training, and everybody goes through the attachment also. OTA रे केते टाइम स्पेंड हमर OTA रे 11 मास. हां सेतरे तापरे आपनकर POP हुए ना, पासिंग आउट परेड हुए. देन तापरे आपण 18 months आउ थरे ट्रेनिंग. हां. सो वी गेट अलॉटेड, हमर अलॉटमेंट हुए यूनिट्स हिसाब रे जे. सो देयर आर सर्टेन पीपल हु कैन चूज द रैंक होल्डर्स. से माने चूज कर परिबे तांकर को यूनिट, आ बाकी मनकर अकॉर्डिंगली अलॉट हुए जो हिसाब रे तांकर परफॉर्मेंस थाए. सो बिकॉज आई वाज इन द जैक डिपार्टमेंट, तो मोर जैक हला. बट माय अटैचमेंट यूनिट वाज 8 गढ़वाल राइफल्स, एंड 8 गढ़वाल राइफल्स जेमते मते मिलिला. The amara notice मिले that the nearest railway station NRS, it was written as Jammu. मु कहली जम्मू कश्मीर अछि, let me see कौन अछि. Then I had the number, मोर ते नंबर प्रोवाइड कर रहा है. I called my adjutant कि जैन सर, I have been commissioned into the 8 गढ़वाल राइफल्स, मुझे कहाँ रिपोर्ट करना है, क्या करना है. Then he said ले आना है आपको, ले के पास नीमू है. I was beyond shocked and extremely happy that hi ले posting अछि प्रथम, which is every boy's dream कि आमे always imagine करू कि बाइक ट्रिप रे ले जिबा बोली बुलेट रे, and हां बुलेट रे जिबा. And I got posted to ले. I called few people, family रे, friends रे, कि ले पोस्टिंग हुआ है, अब तो मजे ही मजे. तो तापरे हाँ ले पोस्टिंग हैला. तो ले पोस्टिंग हेले. सो वी हैव एन एक्लामेटाइजेशन थिंग आल्सो, जोटा एवरी हाई ऑल्टीट्यूड जनरली डज. सिविलियंस को पाई भी थाए, व्हिच दे रेयरली फॉलो. बट सिंस वी आर फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, आमर 6 days एक्लामेटाइजेशन थाए. सो आमे ले पहुंचू वॉट एवर लोकेशन, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एज पर योर ऑल्टीट्यूड. तो ले आई थिंक इज एट 12 or 13,000 ऑल्टीट्यूड. तो सेठी हमरो 6 day एक्लामेटाइजेशन थेला. आफ्टर 6 days आई वेंट टू माय यूनिट. ओके. सो शॉर्टली आपनकर से 18 months ट्रेनिंग रे जिबा. आई जस्ट वांट टू नो अबाउट दैट 18 months जेतले आपण ओटीए परे सेठी बितेले, माने से टाइम रे आपण लॉ रो प्रैक्टिस करथुले ना से मानक सहित, माने आपनकर से मानक सहित आपनकर नॉर्मल ट्रेनिंग जेमती ओटीए रे चलतला सेमती थिला. हाँ. तो टेक्निकली आई एम नॉट अ लीगल ऑफिसर एनीमोर, बिकॉज माय स्पेशलाइज्ड वर्क विल ओनली कमेंस जेबे मु जैक डिपार्टमेंट रे आसीबी. नाउ आई वाज इन अटैचमेंट विथ एन इन्फेंट्री यूनिट. सो मोर ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज would be as an infantry officer only. So as soon as I reported, mo unit ro tradition thela that the initial 1 month I will spend in the lines. Okay. So settebele I was not mane settebele for that time period I am not an officer. Okay. I have to be with the men to know what hardships and what difficulties or what duties are they doing, to be able to supervise them or to be able to
guide them कि तांको ऊपर तांको manage करिबा would be the appropriate term. So for 30 days I have to be in the lines, तांको सहित रहिबी, तांको सहित सोइबी, तांको सहित खाइबी, and guard duties, court duties, whatever duties that they do, जहाँ मिलियो what they do, what they allot it to me. And so there are seniors, like technically as an officer I am superior to them, but for that 1 month I am not superior you are to them. nobody. I am nobody, so I am the junior most like entry माने गोटे कैडेट हिसाब रे मु तांको रंगरूट हिसाब रे गोटे पसिची. So they teach me कि ये अछि सी अछि हमर एमटी सेक्शन अछि, एमटी प्लाटून अछि, तापरे एमटी कंपनी अछि. So that particular phase was of 1 month. तापरे 1 month परे then they call me to the officers mess and then they give me the ranks. Till then I am not allowed to wear my ranks. Okay. तो माने close to 28-29 months माने 2.5 वर्ष आपण पूरा सेम ट्रेनिंग कले जोडा गोटे नॉर्मल Yes. माने नॉर्मल आर्मी जे जाउची फील्ड को इन्फेंट्री बा से डिविजन्स रे से करे आपण पूरा 2.5 years सेम ट्रेनिंग यू गॉन Almost हाँ. देन आपण जैग डिपार्टमेंट को आसे. तो बेसिकली जैग तो आम ऑलरेडी डिस्कस कर सारछंती कि दैट इज द जस्टिस यूनिट ऑफ लीगल विंग ऑफ द आर्मी, लीगल विंग ऑफ इंडियन आर्मी. तो विल नॉट गो डीपर इनटू द लाइक केसेस, बट किछि केसेस जोड़ा पब्लिक रे अछि जोड़ा आपण शेयर करिया को चाहिबे बा आपण पर्सनली जो केसेस जोड़ा निजे डील करछंती जदि आपण शेयर करिया को चाहिबे एमती किछि केसेस. जनरली एते पब्लिक रे न थाए. व्हाटएवर कम्स टू पब्लिक इज द कोर्ट मार्शल इश्यूज. बियॉन्ड दैट इज द एएफटी इश्यूज व्हिच इज आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल. जदि कोर्ट मार्शल परे जे अपील करे सेटा एएफटी रे आसे. So all of those issues are in the public domain. But आमे जोटा deal करूछु, we do deal with the day-to-day discipline of the armed forces. So जेमती मु आगुरु कहिली, army is a different world altogether. Is a parallel world as a civilian world also. जेमती आमे एठी घरे बसछु, army लोको भी सेठी घरे बसछंती. आमो घरे भी चोरी हुए, तांको घरे भी चोरी होतिबो. आम घरे भी कली हुए, तांको घरे भी कली होतिबो. So whatever happens in the defense establishment or in between the defense personnels, we handle that. So it's a parallel world. आमर भी कली कजिया अछि, तांकर भी कली कजिया अछि. And there are also infiltrations जेमती आमर डिफेंस प्रॉपर्टी अछि. से सब भी आमे देखू that the defense estates are not taken by somebody else. And matrimonial issues achi, we also deal with that. So all of that which happens in the civil world happens in the defense world also, and the JAG department takes care of that. Mane are you allowed to talk about that or not? See, most ya kochi na the issues are similar. There could be issues like rape, there could be issues like murder, there could be issues like matrimonial dispute, like a divorce petition or the maintenance allowance, and all of that issues which are prevalent there also. Jemti gote court martial re I was the judge advocate. Seithre the act which was invoked was the POCSO Act, which is the prevention of child against sexual offences. That is also there in the army. Jemti amara civil achi, that is in the army also, because humans are the same. All humans. They can also commit the same crimes. Okay, so jemti ki amara normal jurisdiction achi, semti is the laws are different or somehow they are complementary? Correct. So if a crime is committed, we take over that case from the civil court. That option is always available to us under the criminal procedure code. Then criminal procedure code, now the new act would also allow the procedure that we take over the case and we investigate the matter amo yere. So we start with the court of inquiry. That is the initial inquiry which we call the court of inquiry. Court of inquiry re jaha result baharla, then accordingly we take
a step forward summary of evidence roila ki court martial hobo, then we take the instance. Okay, so court martial माने माने आपण civilian court को जीवो केस नहीं. So court martial is a court constituted by the armed forces. Okay, inside the army. Inside the armed forces. So it is a jury based system. जेमती आमे आगुरु चलतला ब्रिटिश टाइम रे jury based system. So it is technically a board. So board re there would be a presiding officer and there would be members of the board. My role in the board would be as a judge advocate. So I would make sure that the laws and the regulations are being followed as per law. जहाँ procedure चली थी वो सेटा as per army act, army rules, IPC हिसाब रे, CRPC हिसाब रे चलीबो. ठीक से चलची. सेठी चलीबो. So आमर जेमती prosecution अच्छी, defense अच्छी. से भले prosecution अच्छी, defense अच्छी. Prosecution could be an officer, could be an advocate. Defense we give an opportunity. जेमती आमर जो accused थी वो तारो ताकू गोटे opportunity दबो that you may hire a person as a civil lawyer or we give him an officer who is not a JAG officer, who is a normal officer. कि you present the case. ताकू कहिबो option कि भाई जदि if it's a murder case then it is bound that it should be a lawyer, civil lawyer and we pay for that lawyer. But if it's not a murder, it can be anybody. Okay. तो माने starting from माने इन्वेस्टिगेशन रो नहीं कि माने जदि किए माने प्रूव हो जाउची गिल्टी तो इवन जमती कि जेल आउ जेते भी इन टर्म्स ऑफ जदि काकू जेल होची लाइफ टाइम सेंटेंस होची बा काकू माने सेंटेंस ऑफ डेथ होची तो सब किछि इज inside the army only. But again they have the option to go to the civil court. Yes, go to the AFT, go to the high court, go to the supreme court against the court martial proceedings. Yes, that option is always there. But mane jete bele bhi army re kichi hochi that stays inside the because the discipline aspect like we take care of that. That is how the judge advocate general department operates. যদি গোটে লয়ার মানে লেটস সপোজ জনে লয়ার আই এম অ্যাজুমিং কি জনে মানে ଜଣେ LLM I think so the basic requirement army रे ଯିବା ପାଇଁ army ନାହିଁ see again ମୁଁ ବି ଜାଣିଥିଲି when I joined army ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଖାଲି army ରେ ଅଛି but again army ରେ ବି ଅଛି air force ରେ ବି ଅଛି navy ରେ ବି ଅଛି coast guard ରେ ବି ଅଛି BSF ରେ ବି ଅଛି so all armed forces all paramilitary forces have their legal wing and it is some call JAG department, some call it the legal wing and every legal wing takes care of the disciplinary aspect, the legal aspect. Okay. For that you just need a basic law degree. Mu LLM करतली गोटे added degree मो पाए. But तमे LLB करो, BLLB करो कि graduation normal LLB करो. That is the entry level for your JAG department. तापरे you can apply for जेबे vacancy बाहरिबो. आउ आमरो the special part about our JAG department is it is only short service. It is only at OTA Chennai. IMA Dehradun रे नाही आमरो. तो usually जणे जदी bachelor's degree law रे करूची they have a option कि सेमाने जाई परिबे. Correct. They can directly apply. एबे तो सब किछ ऑनलाइन अछि. They can directly apply to Coast Guard, Navy, Air Force जहा अछि तांकर. जेते सारा भी अछि हमरो. जेमति vacancy बाहरिबो से apply करिवे then they go through their training. Okay, so semananकर they directly go to SSB. They directly go to SSB. Correct. So I like taking a cue from you. SSB is a life changing experience. Service Selection Board is a very different exam altogether. I would not call it an exam. It's a personal evaluation. It's a reflection of what you are. It's a 5-day program. It's a 5-day evaluation. जो थरे you cannot pretend to be anybody else. तमे जति चाहिबो कि एटा कहिले भलो भलो देखै कि मु भलो भलो देखि कि जेंति आमे फुटाणी मारि दउ कि सर I have done this, I have done that, I am good in this, good in that.
ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବେ ତମକୁ ସେଇଠି ଅରିଜିନାଲିଟି ସରିଯିବ। So one of my okay SSB experiences ଉପରକୁ ଯିବା. I'll narrate a small incident from SSB. I'll talk about SSB. Interviewing officer ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିଲା that what is your passion? Sir, I like to watch porn. Okay. Which is a different answer and eye-catching answer. ठीक है. The officer is a senior officer. He knows all the tricks कौन अच्छी कौन attention पाइना पे लोग करती. बोले अच्छा, oh that's an interesting answer. So who are your favorite directors? Who are your favorite actors? What genre do you prefer? The fellow SSB mate could not answer it because he wanted to establish कि मैं कुछ ऐसा आंसर दूंगा जो डिफरेंट है, जो the interviewing officer would not expect and he would not question me. But he further questioned and the interviewee could not answer that. पूरा साइलेंट. बहुत बढ़िया. बिकॉज मो पाखे भी बहुत सारा स्टोरीज अच्छी बिकॉज टू ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड निशांत एंड रश्मि. रश्मि इज राइट नाउ इन इंडियन कोस्ट गार्ड्स. से दी जण बहुत टाइम मैंने मेनी टाइम्स दे हैव अटेम्प्टेड द एसएसबी. आई हैव मेनी स्टोरीज अबाउट एसएसबीज की हमर कौन है बिकॉज ऑल द टाइम्स दे विल गो टू एसएसबी कम बैक एंड दे टॉक द होल एसएसबी एक्सपीरियंस. सेट बहुत सारा प्रोसेस है जेमते जीडी था. यू हैव गॉन 2 टाइम्स तो माने इट्स ऑब्वियस फॉर यू बट जेमते कि जीडी था एंड देयर इज अ टेस्ट मोर मन पड़ने आई थिंक पॉलीमेट्री टेस्ट और सम टेस्ट जो थे पिक्चर देखेगी आपन को स्टोरी आपन PPDT which is a picture perception description test. So I'll run through you the SSB process. So the first day is the screening test. So during that test they take you through a logical reasoning वाला सबू question थिबो. तापरे word association test थिबो. So during word association test they'll on a screen a word will flash for 15 seconds and you have to write a sentence out of that. Say word ro gote sentence लिखिबो. It could be any sentence but because the time limit so the first thought has to be your answer. Has to be your answer. So that gives the evaluation ki bhai you have to think accordingly and write. And jodi tome second thought anibo you will miss that word. You will miss that word. And whatever word comes in you write sentences. Say sabre I think that is around 60 words. Tapre there is a examination, there is a test called situation reaction test where there are 60 situations. I'll give you an example. You are walking in the middle of the road and somebody is honking behind you and there is also a middle-aged person walking right beside you and you slap him. What will you do? So random situation they will give you and what would your reaction be? So eithre gote small trick achi. There are 60 situation re there are 2-3 repeat situations also. So what generally happens is if you react to those 3 situations differently the evaluator will catch you. जानि जो कि माने you are not real then. The consistency nahi. That his thought process is different in different situations, which is not a very good thing. Then another exam is PPDT, as you mentioned, which is a picture perception description test. तो सही तरह कौन हुए कि you are shown different pictures और सही तरह you have to make stories. लिखियोगे कौन story? सही तरह technically बहुत गुड़ा को stories अच्छी where you are the protagonist, where you portray yourself to be the hero. What you do and how you end the story. माने story रो body introduction, body and conclusion. Over that there is also a group discussion. Group discussion generally happens between I think 6 to 8 people and there are 3 observers sitting. So there are chest numbers. So you wear
chest numbers, chest number 1 2 3 4 तो ସେମାନେ ମାର୍କ କରିବେ ସେ ଚେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାଇଜ and you refer individually, like if you are wearing chest number 4 or if somebody is wearing chest number 5, you refer that okay, I agree with chest number 5, he had made a valid point, but I would add to this point that ye emiti hobo ki sis emiti hobo. So that is how a group discussion ଯେମିତି କି agreement disagreement ରହିବ group discussion agreement disagreement he jaye. But what generally happens in lot of situations, because what ame kon achu, we are 20 to 22 year old pila mane seithre amaro excitement level बहुत है because अरे हमें सब, and there are lot of people जो कहिबे भाई तू सबसे आगे बोलना तेरा ही पॉइंट ज्यादा होगा, which generally ends up as a fish market. सबु 8 जण जेमती कहिबे कोन हबो कमोशन हबो, and सेई बैच मानकू there is a concept called wash out, पूरा wash out कर दे. I'll expect like think of a small room filled with 8 lawyers. 5 वर्ष की LLM करिया पिला इंटेलेक्चुअली कौन थिबे से लेवल रे से माने को 8 जन को बसई दियो. It's a different world altogether because they know stuff. General awareness is much better. IQ is I feel a little superior. All the good speakers, all the ଆମର ପଲିଟିକାଲ ସ୍ପିକର୍ସ ଆର୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଲୟର୍ସ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାଟର. ଆଉ ସେଇ 8 ଜଣଙ୍କୁ ତମେ ଗୋଟେ ଚେମ୍ବରରେ ବସେଇ ଦିଅ ଆଉ କହିବ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଭାଇ ଇଟ୍ ଇଜ ଡିଫିକଲ୍ଟ. କେହି ବି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବେନି. ବଟ୍ ଲକିଲି ଫର୍ ମି ଆମର ଗ୍ରୁପ ଟିକେ ମ୍ୟାଚ୍યોର ଥିଲା and everybody could voice their opinion. Our group discussion went really well. Everybody had their opinion, everybody shared their small piece. तो समस्त को किसी ना किसी मार्क्स मिलला. जीडी पर कौन आसे PI is a different aspect altogether. PI is when you get into the screening process. Okay. So सेइथरे screened in screened out वाला option था. Okay. If you get screened in, you experience the entire SSB. Okay. If you get screened out at the day 1, bye bye. So screen in hela pore kon tha? Screen in hela pore the entire evaluation process starts. तमे you are allotted rooms. तमे गोटे डॉम रे रहिबो, एका सहित खाइबो, एका सहित पीबो. आर्मी कैंट माने आर्मी बेस रे SSB centers. Okay. There are notified SSB centers, yes, which are under the armed forces definitely, but there are SSB centers. तो तांको सहित रहिबो, तांको सहित सबु बसिबो. So when you are screened in, you feel a different person altogether because you are the chosen few. So I think our screening bele we were around 35-36 people who were screened in. तो 8 वाला चट्टा ये गया. तो as per numbers, chest 1 2 3 4 से हिसाब रे you are allotted your DOMs and ये. So then the entire process starts. Interview is one aspect of your process. So interview happens throughout the 3 days because there are 36 people and the interview is roughly between 45 minutes to 1 hour. इतने टाइम इंटरव्यू है? I am sorry, 45 minutes to 1.5 hour. 1.5 घंटा से इंटरव्यू. So I will share the anecdote about interview. इंटरव्यू रे तमरो जन्मरू तमर जो SSB जाए माने सीट रे बसी जाए सबू स्टोरी कहि देबे. I'll ask you, बले I'll refer to you a small question जहाँ मते पचार थले. Okay Avinash, so where were you born and which was the first school and तुम 5th class में कितना स्कोर किए थे and 10th में what were your marks and 12th में what subject did you opt in and why did you choose law as a subject? This is a single question and you have to answer that question in the same sequence order that he has asked. And such questions, there are 6 to 7 such questions and जहाँ तुम आंसर करिवो ता ऊपर भी अलग अलग क्वेश्चन आसो. जेमती ड्यूरिंग माय टाइम
I remember it clearly. Nirbhaya case astala 2012-13. So setabale I was asked about the Nirbhaya case ki as a legal person what is your opinion, what is your viewpoint ki kya ho raha hai kya nahi ho raha hai, juvenile justice act kyun laga hai kyun nahi laga hai. So that was the question. So there are a lot of things ki people bhabuchanti ki JAG interview or JAG SSB is different. I'll clear the air. SSB is an SSB. More भी same opinion thila before this podcast कि JAG entry माने in terms of SSB and the training experience No. different. It is but similar. it is not. See, SSB is a parameter where officers is a parameter where officers are selected based on certain qualities. So the quality has to be equal for a JAG officer, for an infantry officer, or for any officer Anyone. for that matter. So you need to have officer-like qualities, OLQs, which we call them, leadership, discipline. Baki sabu there are 7 or 8 qualities which officer-like qualities achi. So seita has to be for equal standards. तो आपण 5 वर्ष आर्मी को सर्व कले देन तापरे यू टुक अ वॉलंटरी रिटायरमेंट Special release. ओके देन कोन पई आर्मी छाडिले So I was commissioned as a short service commissioned officer. Amar gote achi SSC. The officers who are commissioned in OTA Chennai are short service. We have an SS number, and one who are commissioned in IMA, they are permanent commission. Amar option achi at the end of 10 years to either take permanent commission or extend it by 4 years extension ko hota, or take release. So there was an option at the end of 5 years which is called a special release. You can take a special release at 5 years with all benefits, with all you're not premature retirement. You are taking a release. Which is different. Dita jako different अछि. Release and retirement are different. तो मु देखिली कि 5 वर्ष हे गेलानी. My parents were here. My wife is working. She is in the judiciary. तो तांकर भी गवर्नमेंट जॉब, से भी अलगा लोकेशन रहउथले, मु भी अलगा लोकेशन रहउथली. आउ माय पेरेंट्स एंड माय इन-लॉज वर इन कटक. तो मु देखिली तीनटा लोकेशन इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू मैनेज. प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ भी टिके ये हे जाउची. मु कहली स्पेशल रिलीज नहीं जिबा. सो दैट्स द स्मॉल रीजन दैट आई टुक स्पेशल रिलीज. मु कहली 5 वर्ष रे आई हैव गेन्ड एनफ एक्सपीरियंस. आई कैन डू लिटिल एक्स्ट्रा इन माय सिविल लाइफ. तो सही हिसाब रे मु एग्जिट नेली. मोर गोटे क्यूरियस क्वेश्चन आछि जेमति कहले कि मैम भी जुडिशियरी रे अछन. तो आपनकर लव मैरिज लव मैरिज अच्छी. तो आमे कॉलेज रे एका सहित थिलु. मधुसूदन लॉ कॉलेज नाउ यूनिवर्सिटी. हाँ, तो आमे 5 वर्ष एका सहित पढतलु. तापरे मु मास्टर्स पई बोली. शी वाज परसुइंग हर जुडिशियरी एस्पिरेशन. तो तार 2000 आई थिंक आमर 2014 रे एका सहित हैला. मु कमिशन हेली आउ तांकर भी सिलेक्शन हैला. मैरिज केबे हैला? आमर मैरिज 2017 रे. 17. हाँ. सो माने आपण रिलीज केबे हैले? मु 2020 रे रिलीज हेली. टेक्निकली 2000 सेप्टेम्बर 19 रे रिलीज हेली. So army offers you also resettlement programs. If you leave the army at any point of time, army takes care of your resettlement. Resettlement as in कि तमे life रे आगे कौन करिवो. So there are various options of what you can opt for. जेमती you can do a college, you can do a degree, you can take a course in whatever aspect of life that you are dealing in. मु देखिली गोटे मोर there was a DGMP course which is Defense General Management Program which happened in IIM Lucknow. तो मु IIM Lucknow रु 6 मास कोर्स करली. तो then that was for 6 months that I got released in January. तो पोस्ट आर्मी लाइफ माने आर्मी रु बाहरला परे लाइफ एबे केमती माने लाइक एबे आपण प्रैक्टिस करूछन जनरल प्रैक्टिस ना किछि अलगा अछि माने डेफिनेटली एज द
मेन इन फैमिली तो आमको ब्रेड एंड बटर अर्न करिया पड़े तो व्हाट इज राइट नाउ योर सोर्स सो मु जेबे 6 मासिया प्रोग्राम करली आई वाज क्लियर इन लाइफ कि मते कॉर्पोरेट लाइफ रे जिबार नाही बिकॉज देयर वर कॉर्पोरेट ऑफर्स आल्सो कि तमे लॉ ऑफिसर हे जाओ ए कॉर्पोरेट आसी जाओ एठी पसी जाओ देयर वर आल्सो लॉट ऑफ लीगल वैकेंसीज अक्रॉस द पीएसयूज भलो ऑफर्स भी थिबो भलो ऑफर्स अछि कि ऑप्शन थिला कि पसी जाओ एथरे आसी जाओ बिकॉज veteran as a military veteran you are given weightage across all categories age relaxation thaye weightage thaye because they know that you have served in the forces that and you have something special you have something extra to give in other than a civilian officer तो मु कहली भाई मु तो रिलीज नेली गोटे कंडीशन पई कि मते कटक रे रहियार अछि फैमिली सहित रहिवार अछि सेठी काम करियार अछि तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दैट आई कांट टेक योर ऑफर कि मु को भी पीएसयू की गवर्नमेंट अंडरटेकिंग रे अप्लाई करिबिनी दैट वाज अ क्लियर सेट कि मोर करियर नाही हाउ कमिंग बैक सिंस आई हैव अ लॉ डिग्री एंड practicing certificate by the Bar Council of India तो आई कैन प्रैक्टिस लॉ हाई कोर्ट रे कि लोअर कोर्ट रे मोर ऑप्शन अछि प्लस माय फादर इज इनटू लॉ लॉयर अछि लॉयर अछंती तांकर चेंबर अछि आई कैन ऑलवेज जॉइन हिम तो दैट ऑप्शन इज देयर तो January 2020 I got released मासे दी मासे आई टुक टाइम टू गेट सेटल्ड इन एंड 2020 मार्च एवरीबॉडी नोज कौन हला कोविड हला तो एवरीथिंग वेंट स्टॉप सब वर्चुअल चलला सब चलला देन माय वाइफ वाज इन केंद्रापड़ा दैट टाइम तो आई could spend the best of times with my family during that time so that was a good break for me हाँ कि मझिरे आराम से 10 months रा break हमर गुली खटी चलला तापरे 2021 onwards I started my practice not exactly practice I used to assist my father तापरे my I also am my professional runner सेही एस्पेक्ट भी आमे टच करिवा हां डेफिनेटली हां मोर रनिंग प्रति भी टिके इंक्लिनेशन थिला सिंस माय कॉलेज डेज तो आई टुक दैट इनटू अ प्रोफेशनल लेवल आर्मी रे भी आ वंस आई रिलीज्ड थ्रू द आर्मी सेते बेले भी मु सेटा परस्यू करूथिली ओके ऑडियंस मानको गोटे कॉन्टेक्स्ट देवा पई मोटा कहि दोछि कि कैप्टन अविनाश से फाउंडर द तमाशा प्रोजेक्ट रा and also if I'm not wrong the Katak Runners is a community se tar भी founder अछि तार भी founder so सेटा आपनकर पोस्ट आर्मी माने 2021 रे से आइडियाटा केबे तो दिला स्टार्ट केबे गेलो Katak Runners was always there so to give an insight Katak Runners Katak Cyclist Tamasha project was born very late so to start off we started off with Katak Cyclist तार मु गोटे लाइक टेकिंग बैक यू इनटू हिस्ट्री 2011 रे मु दिल्ली पळेली फॉर माय मास्टर्स ता पूर्वरु मु टिके स्पोर्ट्स रे थिली दौड़ा दौड़ी करूथिली मते आइडिया लागिले कि भाई चलो दौड़ा दौड़ी करछि भलो अछि बट देयर वाज नो रनिंग कम्युनिटी और देयर वाज नो स्पोर्ट्स इवेंट्स इन Katak Bhubaneswar where we could participate as a general person jaha achi athletics ra achi which we were not aware so when I went to Delhi for my masters mu dekhili bhai ye to alga world achi there were community events on running there were community events on cycling I interacted with a group called Delhi Cyclist which went for 50 60 70 kilometers of cycling on weekends Saturday Sunday semane cycling karanti तो दैट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर तो सेते बेले बॉट आई थिंक 2012 रे आई गॉट माय फर्स्ट साइकिल गियर्ड साइकिल जिमते हमें चिंता करू नो फैंसी साइकिल सेटा मु नेली आई एसोसिएटेड माय सेल्फ विथ दिल्ली साइक्लिस्ट तापरे जेमती आई मूव्ड आउट टू अ डिफरेंट लोकेशन मयूर विहार रे आई एसोसिएटेड माय सेल्फ विथ साइकिल सूत्रा तो साइकिल सूत्रा रे वी वर लाइक माइंडेड पीपल सेठी हमें साइक्लिंग करू 50 60 70 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर्यंत गलु तापरे विथ टीम 3 साइक्लिंग आई एसोसिएटेड माय सेल्फ आमे ब्रेवेज करू ब्रेवेज इज अ पेरिस कॉन्सेप्ट सेठी
फ्रेंच रू स्टार्ट है फ्रांस रू स्टार्ट है वेर वी यूज टू साइकल लॉन्ग डिस्टेंस 200 kilometers 300 400 600 so those are called breves. So I did 200 kilometers and 300 kilometers during my time in Delhi. तो तापरे आसिया परे I started Cuttack cyclist in Cuttack. Me with संजोग साहू आमे Cuttack cyclist start करलु. Cuttack cyclist was the first initiative कि सी phase रे मुझे बे masters परे आउ आर्मी पूर्वरु. For that 5-6 months I ventured into भाई cycling career अछि. Also in Delhi I developed कि there is a community running event भी हुए. आमे जोटा एबे सुनुचु एटेल दिल्ली हाफ मैराथन बहुत पॉपुलर 2012 रे मु सेथरे पार्टिसिपेट करछि. एज अ नॉर्मल रनर मु पार्टिसिपेट करली मु आई बट द एंटायर एस्पेक्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग मु चिंता करतली दैट आई वुड नॉट बी अ नॉर्मल पार्टिसिपेंट. मोर कॉम्पिटिटिव aspect the factor was always there since the childhood. I trained for 3 months. मु एमिति गुल्ली खट्टी हिसाब रे गलिनी. I used to train in parks in roads दौड़ा दौड़ी करथली कॉलेज परे दौड़ा दौड़ी करथली 3 मास ट्रेन करली रजिस्टर करली. I think in November 2012 एटेल दिल्ली हाफ मैराथन हेतला and half marathon is a 21.095 kilometers. तो मु सेतरे 1 hour 51 minutes रे करिली. And people were shocked. What a timing. कि are you seriously not a runner? What are you? माने the timing is insane for a non-runner. मु कहली मोर प्लान थेला सब 2 करियार आउ हेई गला. मते 2-3 जण कहले कि भाई you have potential, work towards it. I did not run that much during that time because मते running एते जणा नथला एते events नथिला. तापरे I used to cycle a lot. जेमति मु कहली 200 कहली 300 करली. There were duathlon events. सेतले मु duathlon विषय जानली. Duathlon is basically an event where you run, you cycle. Then you run. Triathlon रो छोटो भाई. Swimming is triathlon. Duathlon is running, cycling, running. तो सेथरे भी कहली सेथरे भी I could win podiums और हरिका. तो तापरे when I came to Cuttack cyclist आरंभ हला. Cuttack runners we did the first event Cuttack runners रो way back in 2013. We did a 5 kilometer and 10 kilometer run Cuttack run. सेथरे around 100-120 people came in. तो छोटो इवेंट कोटे करथली. तापरे तो मु आर्मी रे पसिली हो. I think तापरे आर्मी रो रिलीज हला परे 21 परे I think Cuttack runners actively अपन जाबे. हां सो Cuttack runners जेमती कोविड सरीला टिके सॉरी तो कोन टिके कमिला 21 रे. तो हमें प्लान करलो कि भाई चलो लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ रनर्स बिकॉज़ मु एका दौड़थली. हां आई वाज डूइंग लॉन्ग डिस्टेंस मु एका दौड़थली. मते लागुतला भाई कोन करूची अन्य लोकन को भी दौड़िया कथा. Then I started the small initiative गोटे Cuttack runners ग्रुप बनै की लाइक माइंडेड पीपल को टिके ऐड करी की गोटे छोटो कम्युनिटी रन हिसाब रे सेटा हमें स्टार्ट करलु. देन तमाशा प्रोजेक्ट केमती स्टार्ट हला ता पछर आइडिया कोन होतले. तमाशा प्रोजेक्ट वाज द ब्रेन चाइल्ड बिकॉज मु जहा बाहर एक्सपीरियंस करूथली इवन ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज इवन ड्यूरिंग माय दिल्ली स्टेंट इवन ड्यूरिंग माय आर्मी डेज मु देखली जो एडवेंचर एस्पेक्ट आउटडोर एस्पेक्ट आम पिलांकर टिके कम अछि. रुचि अछि बट ऑप्शन नाही. किछि ग्रुप एक्टिविटी कि किछि हाइकिंग कि काइकिंग कि किछि गेट टुगेदर कि किछि रनकेशन भलिया किछि ऑप्शन नथला. तो वी वांटेड टू क्रिएट समथिंग व्हिच अ मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफर्स इन कटक. सेटा हमर थिला कि हमें गोटे डांस वर्कशॉप करू किबा गोटे गरबा वर्कशॉप करू व्हाटएवर द टाइमिंग व्हाटएवर द सिचुएशन इज हमें गोटे इवेंट करू अ वर्कशॉप करू. तो सही हिसाब रे तमाशा प्रोजेक्ट वाज बोर्न वेयर द एंटायर एस्पेक्ट वाज फिटनेस along with entertainment. तो सेटा हमर थिला गोटे एक्चुअली एटा भी हमें किछ टाइम पूर्वरु हमें कथा होतलु फ्रेंड्स माने कि यार सेमती किछ कम्युनिटी नाही किछ करिया पई. सो आई गॉट द एक्सपोजर. मुतला कटक रे रहथली मु 5 वर्ष कटक रे रहिची. सो मु कायाकिंग बहुत करे
लाइक क्रेडिट्स टू सत्याकी भाई बिल्कुल बिल्कुल ओडिशा मैरिटाइम ओडिशा मैरिटाइम बहुत बढ़िया काम करछन मो ପାଇଁ ସେଟା ବହୁତ ରିଲାକ୍ସିଂ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଏସ୍କେପ୍ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଆମର ଏବେ ଟିକେ କମ୍ ହିଁ ଯାଇପାରୁଛି ବିକଜ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି ଆଉ କାମ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ବଢ଼ିଲାଣି ବଟ୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ସେଇଠିକି ଆଉ ଦେନ୍ ନରାଜର ପରଠା ଆଉ ମସାଲା ପରା ଦ୍ୟାଟ୍ସ କ୍ରେଜି ତ ଲେଟ୍ସ go back to okay ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ମୋର ଥିଲା ଯେ ଯେମିତି କି ମୁଁ ଯଦି ଏବେ आई नो यू राइट नाउ एज कैप्टन अविनाश ओके जदि आमे कैप्टन को हटेदेवा सो एज ए ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆର୍ମିକୁ ଯାଇନଥିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ ଲାଇଫ୍ରେ କେମିତି ମଣିଷଟିଏ ଥିଲେ ମାନେ ସେମିତି ବଦମାସ ନା ଶାନ୍ତ इंट्रोवर्ट केमती टाइप रा इंट्रोवर्ट तो नथिली लाइक वी हैड अ स्मॉल ग्रुप हमर ग्रुप थला जेमती मोर घर सीडीए मोर सीडीए मु 30 वर्ष लाइन रहूछु तो मोर सेठी लोकल सांग थिले आमे समर टाइम रे गुल्ली खेलू तापर क्रिकेट फुटबॉल जहा सब व्हाटएवर आउटडोर स्पोर्ट्स वी कुड प्ले वी यूज्ड टू प्ले तापर जेबे कॉलेज आसिली सेतोले मते टिके एक्सपोजर मिलिला देखिली गोटे ग्रुप अच्छी देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड YHAI यूथ एसोसिएशंस यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया तो दे यूज्ड टू कंडक्ट ट्रेक्स एट एन अनबिलीवेबल प्राइस माने एबे भी करछंती 3000 4000 2000 टंका रे तमे सारपास ट्रैक करि परिबो व्हिच इज अ 9-day ट्रैक खाइबा पिया रहिबा सब इंक्लूडेड अछि तो माय फर्स्ट एक्सपोजर टू द हिमालयाज was when I was in my 3rd year of college. मु कहली भाई ये तो गोटे अलगा दुनिया ट्रेन रु दिल्ली पळेली दिल्ली रु वोल्वो धरी के मनाली पळेली तो सेठी तांकर बेस कैंप आई थिंक गोटे रो बेस कैंप ऑट थिला आ गोटे रो बेस कैंप कसोल थिला तो सेठी आई कुड डू 2 expeditions with them. I did Sarpas trek and I did Jalori Pass mountain biking expedition with ये दीटा जको मु करची YHAI रु गोटे करथली ग्रेजुएशन गोटे मास्टर्स बेले तो सेटा करची देन व्हेन आई वाज इन मास्टर्स मु आउ गोटे करथली हमर गोटे अछि इंस्टीट्यूट गुलमर्ग रे IISM which is Indian Institute of Skiing and Mountaineering so they conduct skiing courses only in winters which is a 15-day course मु सेटा बेसिक एंड इंटरमीडिएट करची सो सेतेबेले मु स्कीइंग करथली वेयर स्कीइंग वाज 5000 रुपीस फॉर अ 15-day कोर्स इक्विपमेंट रहिबा खाइबा सब किछि व्हिच इज अनबिलीवेबल इवन टिल टुडे आजिकार प्राइस आई थिंक 15000 थिबो व्हिच इज कंप्लीटली वर्थ डूइंग बिकॉज़ तुमको गोटे वर्कशॉप करा होची 15 दिनिया वेयर यू लर्न द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ स्कीइंग also experience 15 दिन तमरो छुट्टी रहउची if you have the time period 15 दिन तमे काई वेस्ट न करिवो माने काई स्पेंड न करिवो तो सेटा मु दीटा करची आई कुड डू द एडवांस जदी एडवांस करथांती आई कुड हैव बीन इन अ डिफरेंट प्लेस ना बिकॉज़ स्कीयर्स बहुत कम अछंती हमर देश रे आई कुड हैव बीन अ प्रोफेशनल स्कीयर मे बी that time could have तो बेसी एडवेंचर आउ स्पोर्ट्स completely into outdoor जेमती कॉलेज रे आई हैड हर्ड अबाउट बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और हिमालयन माउंटेनियरिंग ऑफ इंस्टीट्यूट सेतेबेले स्पेयरिंग 30 days was a task and I did not have the maturity कि ए वर्कशॉप कि ए कोर्स will give a different will broaden my horizon मु सेते चिंता करनथली तो I did not do the course but luckily I could do the military version of the course at Hawes सेटा मु करथली and I could also visit Hawes जोटा मु कहउतली तुमको पूर्वरु गुलमर्ग रे जोटा तांकर विंटर जोडी कोर्स हुए I visited the Hawes Academy in 2011 and 12 मुझे IISM रे थिली सेतोले मु विजिट करथिली I could get a glimpse of Hawes but I never thought कि मु भी Hawes alumni केबे थिबी
but after passing out of the like after getting released from the army मोर गोटे इच्छा थिला कि मते गोटे विंटर नहीं गोटे माउंटेनियरिंग कोर्स करियार अछि तो सेटा आई कुड डू इट फ्रॉम निमास which is the National Institute of Mountaineering and Allied Sports सेटा हमर अछि दिरांग अरुणाचल प्रदेश 28-day course. I think I paid 12 or 13,000, which is a subsidized course by the Ministry of Defense. That's another 28-day course, Arunachal Pradesh. Again, life-changing experience because I was with civilians. But the interesting part is, जेबे मु हॉर्स करूथिली आउ जे मो सहित ट्रेनिंग करूथिले अलगा अलगा यूनिट रो पिला माने आसुथिले they were my instructors in Nimas. And the surprising part or the best part is that they could not recognize me as that I am Captain Avinash. I went there with zero identity. I am Avinash Chimanka, came here to do a course. At the end, when like I was also lucky, privileged to be awarded with the best student award. तो सेठी आफ्टर गेटिंग द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मु डिस्क्लोज करली दैट आई एम फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस एंड मु हॉर्स करिछि तो दे वर शॉक्ड कि बिकॉज माय कोर्समेट्स आर आल्सो शॉक्ड कि भाई हाउ कुड यू प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी फॉर सो लॉन्ग 28 days इज अ लॉन्ग टाइम एंड मोर सब सांग माने फुटाणी मारथले कि यार सांग एठी अछि ता सांग सेठी अछि एंड आई डिड नॉट divulge any details because I wanted to do a course as a civilian because I was in a civilian institute. तो when they realized कि भाई तो मानना पड़ेगा कि you could stay in that zone and not disclose, मुगली साहब अगर मैं बोल देता दो चीज़ होता, या तो आप मेरे को बहुत ज़्यादा रगड़ते या आप मेरे को छोड़ देते मेरे को दोनों ही नहीं चाहिए था. आई वांटेड कि मेरे को वही एक्सपीरियंस मिले जो एक नॉर्मल बंदे को मिल रहा है. यूजुअली गोटे ओपिनियन अच्छी लोक मान भितर कि आर्मी चेंजेस ए पर्सन, आर्मी गोटे लोक को बदल दिए. तो आपन को कौन लगे कि आर्मी को जीवा पूर्व आपण केमती थिले, आर्मी आपन को कौन शिखैछि, आउ आर्मी परे माने एज ए पर्सन आपण भीतर कौन कौन चेंजेस आछे? एज यू मेंशन कि आर्मी चेंज कर दिए माने ओवरऑल चेंज कर दिए बिकॉज योर पर्सनालिटी जोटा बाहर थिलो एज अ सिविलियन तो आमे जेबे ओटीए भितरे पसु द एयर इज डिफरेंट बिकॉज यू आर सराउंडेड विथ मेन इन यूनिफॉर्म, यू आल्सो वुमेन इन यूनिफॉर्म. तो से हिसाब रे पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए. Patriotism is not just an aspect, is the most important aspect of joining any armed forces. तापरे discipline again is of the मतलब highest importance. माने without discipline तो हमरो किछि हेई परिबोनी. आमे हमरो कहउचंती right time, right place, right rig. ए तीनटा जिंस जदी हेलानी मनिसो नुह तमे माने ऑफिसर जवान सेटा मु कहूनी तमे मनिष ही नुह. तमे जदि राइट टाइम पहुँची पारियोनी, राइट प्लेस को पहुँची पारियोनी, यू नॉट ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली, यू आर नॉट अ मैन ऑफ वर्थ. तो से हिसाब रे माने रहिबा, खाइबा, कथा हबा, अप्रोचिंग टू पीपल, पर्सपेक्टिव, तापरे फेसिंग दी लाइक वियर्डेस्ट एंड द हार्डेस्ट सिचुएशंस माने आ किछि फरक पडुनी. माने आमे जहाँ सब ट्रेनिंग रे करिछु, द हार्डशिप्स दैट वी हैव अंडरगॉन इन ट्रेनिंग ड्यूरिंग आवर अकेडमी डेज, इवन इन अ यूनिट डेज, इज अनमैचेबल. मेंटली टफ बने दे मनिष. आमे सब जहाँ करिछु माने राति 2टा रे ट्रेनिंग फॉर 48 hours, 56 hours without sleep, without adequate food at different terrains. If you would know, Chennai is super hot. आमर कोस्टल माने कटक जो भलिया ताठू भी अलगा लेवल. एंड व्हाट आर्मी इज ऑल आउटडोर्स. आमर बैच थिला अक्टोबर टू सेप्टेम्बर, मोर पासिंग आउट सेप्टेम्बर रे.
तो आमर जो बैच थिला फ्रॉम मार्च टू सेप्टेम्बर इज सुपर डुपर हॉट आमे रास्ता रे गडुचु रोलिंग करूचु पुशअप्स करूचु माटी रे बसीचु राति अधारे बसीचु दिन रे करूचु सो देयर इज नो टाइम फॉर ट्रेनिंग देयर इज नो टाइम फॉर रेस्ट आमे ट्रेन भी करू रेस्ट भी करू सो देयर हैव बीन टाइम्स कि आमे साइकिल चलाउचु आमे सोई पड़छु आमे पड़ी जाउछु so that is how our life has been that it is unmatchable kichi ye nahi to the mental robustness is at a different level altogether and that reflects in your personality also because tapare mane once you not just your army life but once you enter a civilian world you take those characteristics tome jo senior manak saito uthiki mane uthucho basucho that also spills over you आउ तुम जो जवान अच्छा दे कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री तांकर कल्चर तांकर फूड तांकर हैबिट्स सो ऑल ऑफ दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग यू एज एन इंडिविजुअल तो माने सेठू एते सारा डिसिप्लिन वन ऑफ द फैक्टर आपण कहले डेफिनेटली कंसिस्टेंसी बिकॉज एवरी डे एंड डे आउट देयर आर थिंग्स जोटा करिया को पड़िबा आपन को and that's a different world that's a world of discipline and that's a world of routine I must say absolutely then tapare hardships bahut sara during the training units time re apan kahile to apan ko emti lage ki mane normal civilian world re asla pare there is a advantage because as a civilian ame semti kichi mane एज ए सिविलियन मु एटा जेनेरिक कहूनी मो पर्सपेक्टिव टा कहूची कि वी टेंड्स टू बी ए बिट माने लेजी आउ टिके इनडिसिप्लिन बिकॉज माने आई लव टू लिव ए कैजुअल लाइफ तो बिकॉज इट वाज योर पॉडकास्ट बिकॉज आमे जतबेले आर्मी सुनंदी ना वी हैड ए रिस्पेक्ट देन तापरे हमरो sense of responsibility भी रोचे when we are dealing with someone who is in army or worked in already in army right हमारा sense of responsibility भी रोची whenever I schedule anything any like call that day जो दिन हमें कथा होतले call रे anything I was so punctual like मते इंदे लागिला कि मु एते punctual त केबे भी like 3 PM हमें schedule करतले से दिन call I called you exactly at 3 PM तो मु मत लगला कि अरे लास्ट केते टाइम मित्र में एते पंक्चुअल था नहीं सो टुडे आल्सो वी शेड्यूल द पॉडकास्ट के टाइम रे ए टाइम रे थिंग्स आर देयर सो सही कथा ही मु पचारथली कि माने इज देयर एडवांटेज कि जतबेला हमें द कल्चर दैट वी वर ग्रूम्ड इन इट आमे जबे बाहर को आसु इट स्पिल्स ओवर एवरीबॉडी because jaha discipline jaha courage jaha confidence which we have been imbibed in our training days in an academy days हम जो सब देखु छु which automatically माने if I am talking to a person से automatically जानी परिबो कि मु आर्मी रे अछि किबा there is some connection through the armed forces that is always there advantage हमर जो veteran community is a very strong community and all of them are placed at a very good position so when you are dealing with a veteran community kimba gote high profile loko ko saito so the subordinates will also act as team members to tankar bhi sense of responsibility sense of discipline sei bhola rahi jo tankar so it is an always advantageous position jota ame rahuchu to ebe recently jemti gote amaro आर्मी रो गोटे एबे रिसेंटली आर्म फोर्सेस रो गोटे आई थिंक गोटे रूल पास आउट हेतिला आई थिंक दैट इज कॉल्ड अग्निवीर स्कीम ओके तो ता विषय रे सेटा विषय टिके आपण एक्सप्लेन करन आ ता विषय रे आपनकर ओपिनियन कोन बिकॉज बहुत बेसी कथावार्ता ता विषय रे हेतिला आई थिंक 2022 रे अग्निपथ स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करला so the trained personnel will be called Agniveer both male and female तो तांकर जो अच्छी they will be
Agniveers for 4 years. And after that, 25% will be absorbed in the regular army. And some portion, baki sabu chaltala, there is some discussion. Some would be absorbed in the PSUs. And rest of all will be in the civilian world. So there is an advantage, there are disadvantages also. Because in the cream period 4 years re 18 ru 22 24 पर्यंत तमे forces को serve करियो and then they are released. So not going into the modalities of what the controversial topic is, but it is a good aspect because people would know कि 4 वर्ष लाइफ कौन अच्छी 4 वर्ष तमे सर्व कर दउछो, then you get an experience of what being in the armed forces is. And when you get out of the armed forces, your perspective changes. You are a different person. You can do your own startup, you can join any organization, you can do your own business. So that confidence part plus the tagline, that the tag of being a veteran, being an Agniveer, always plays an upper hand. Okay, but definitely there is an advantage तो अच्छी 4 वर्ष तले हमें आर्म फोर्सेस रे रहउचंती तो विल डेफिनेटली लर्न ए लॉट बिकॉज आमे जदी गोटे आर्म फोर्सेस रे थिबा लोकर आइडेंटिटी बा तार लाइफ रु एते इंस्पिरेशन नै पारुछु बीइंग इन दैट फील्ड वी विल लर्न ए लॉट. करेक्ट. बट माने जदी जेमते कहले 25% लोक माने नॉर्मल आर्मी को जिबे माने आर्म फोर्सेस को जिबे, रेस्ट ऑफ द 75% दे विल आसीबे सिविलियन अगेन. तापरे से क्रीम पीरियड रे 4 वर्ष एमती लागे नि कि पछुआ है जी अगेन सेटा मो कहली कंट्रोवर्शियल टॉपिक हला. तो जेमिति तांको पछुआ हबा न हबा इज अ वेरी रिलेटिव टॉपिक बिकॉज दे हैव दैट 4 years of experience which a normal person will not have. They will have a 4 years perspective which a normal person will not have. So they will have an added advantage when they apply for jobs or when they go for startups, as I mentioned. तो तांकर टिके एडवांटेज थिबो which will play an upper hand. Definitely. तो मो गोटे क्वेश्चन जोटा सबु गेस्ट मानंगु मु पचारे, वन लेसन और गोटे लाइफ लेसन जोटा कि आपण निज लाइफ रे इंप्लीमेंट करछंती आउ सेटा आपण लाइफ को चेंज करछि, पॉजिटिवली इंपैक्ट करछि, आपन कोन लागे कोन गोटे लाइफ लेसन जोटा लिसनर्स मन पे जेमती मु मेंशन करथली 2012 रे मु प्रथम रनिंग इवेंट करली एटेल डेली हाफ मैराथन. तापरे मु एते रनिंग करली नि आर्मी रे आई यूज्ड टू रन एंड माने एज अ रूटीन वी यूज्ड टू रन. देन आई started participating in events in 2018 onwards. 18 onwards I did like 17 onwards I did half marathons, तापरे full marathons. तापरे मु चिंता करली कि भाई तो I माने to be boastful of myself, I thought I am good at this game. ए रनिंग जो गेम अच्छी एथरे मु करि परिबि किछि, and that is because of my background in army, because of the training, because of the discipline, because of the intensity, because of the consistency. मु कहली इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ. Then I slowly started pushing my limits. I did full marathon, I did 50-kilometer runs, then I did 100-kilometer runs, then I did 24-hour run, then I did 160-kilometer, 100 milers. Sabuthre, because of the training, because of the discipline, because of the consistency, I was winning. I could stand in podium in all major events that I had participated. जोटा मु कहउतली गोटे winning mentality develop हैला. So I think that is a gift of me being in the armed forces. So pushing the limits is basically ये दिल मांगे मोर. As we started more, ये दिल मांगे मोर. मु 50 रे कहली मु जितिली, 100 रे भी जितिबी, 100 रे जितिली, मु कहली भी 160 रे भी जितिबी. And whatever field I entered, touch wood, there is always that success which had, like I was bestowed with that success, and I all credit goes to the armed forces. मुझे कही परी. So माने although ये question टा मुझे बड़ा last रे पचारे, but पुणी मोर मुंडरे आउरी questions किछ किछ आसी गला. As you mentioned about ultra marathons, okay. तो मु डेविड गोगिन को बहुत फॉलो करे. Okay. Are you? Yes, absolutely. Yes.
तो ମୁଁ ଡେଭିଡ୍ ୱିଙ୍ଗ ବହୁତ ଫଲୋ କରେ ସୋ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମାରାଥନ୍ର ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ବିକଜ ଆଇ ଏମ୍ ସିଟିଂ ୱିଥ୍ ସମବଡି ଫର୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମାରାଥନ୍ସ ଦୌଡ଼ିଛି ଓକେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବାସ୍ ଖାଲି ଦେଖିଛି ଶୁଣିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବଟ୍ ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବସି ଅଲ୍ଟ୍ରା ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ତ ରଫଲି କେତେଟା ଅଲ୍ଟ୍ରା ମାରାଥନ୍ସ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି 10-12ଟା तो if I'm not wrong audience ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ perspective ଦଉଛି ultra marathon is anything above 100 kilometers nahi so the category of running is half marathon full marathon anything beyond a full marathon 42.195 kilometers is considered an ultra marathon so okay. technically hame jebe dekhu we generally start an ultra marathon 50 kilometers plus 50 plus is an ultra marathon and which happens at different terrains road trail mixture सब कुछ हुए so 50 80 120 160 beyond that whatever distance you can pick will be an ultra marathon okay so मोर गोटे इंटरेस्ट थिला टू रन माने रनिंग रो भी मोर गोटे इंटरेस्ट गोटे टाइम रे रही छी ड्यूरिंग द कॉलेज डेज मु 5 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर्स मैक्सिमम दौड़ी छी एंड मते 10 किलोमीटर्स से भी लागे कि आई एम पुशिंग माय सेल्फ फिजिकली मेंटली भी बहुत तो we are talking about 160 kilometers like post 100 kilometers so mane usually mane when you are talking about a marathon also gote normal loko pai seta emti lage ki marathon 42 kilometers is like really difficult so when you are talking about 100 kilometers like 100 kilometer it is mane way beyond okay mane I'm not like dramatizing it but 100 kilometers is a big thing right so Katak ru Bhubaneswar is 22 kilometers right so se wala panchta distance am cover karya achi and we are talking about 160 kilometers okay तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जानिया चाहिए कि केते टाइम रो हुए 160 किलोमीटर्स केते टाइम पे दौड़िया को पड़े आउ व्हाट इज द मु दीटा दिन से जानिया चाहिए ओके जस्ट टू गोटे होची फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट एंड अनदर वन इज मेंटल एस्पेक्ट ऑफ इट तो फिजिकल एस्पेक्ट रे माने बॉडी तो गिव अप करू थु एब्सोल्युटली माने डेफिनेटली गिव अप करियो गोटा पॉइंट रे एंड देन व्हाट इज द मेंटल एस्पेक्ट से विषय टिके डिस्कस कर तो जेमती एज यू मेंशनड 42.195 किलोमीटर इज अ लैंडमार्क डिस्टेंस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल माने आई थिंक लेस देन 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज रन अ मैराथन डिस्टेंस which is a crazy number okay माने बहुत लोग को एस्पायर करंती बट से माने करि पारंतनी and ultra marathon is again a very small community compared to what a full marathon is ebe world re ultra marathon is picking up india re bhi is slowly growing up but amaro community achi choto community achi which is growing so mindset of an ultra marathon is pushing beyond your limits because after 42 or after 30 or after 25 or after 50 kilometers as you mentioned your body gives up tapre your body is not running it's the mind which is running so you don't have to always train your body but you have to train your mind ki bhai मते 100 किलोमीटर को जीबार अछि केमती जीबार अछि 6 months पछु जीबा पड़ियो तुमको you have to train for minimum 4 to 6 months to achieve that 100 kilometer milestone if you are not training you are being a fool tame nijo body ku kharab karucho and you are not gaining out of that anything तो मोर जहाँ भी मन जहाँ भी मु 100 160 180 जहाँ भी किलोमीटर करी तार पछरे गोटे 6 मासिया ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छी से ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एब्सोल्युटली से ट्रेनिंग प्रोग्राम रे मोर वीकली माइलेज अच्छी मोर वीकली डाइट अच्छी मु कोन खाउची मु केमती ट्रेन करूची स्लीप इज वेरी अंडररेटेड बट स्लीप प्लेज अ वेरी इंपोर्टेंट रोल इन ऑल एंड्योरेंस स्पोर्ट्स तो इट्स नॉट जस्ट अल्ट्रा मैराथन इट्स एंड्योरेंस जेमती मोर 160 थिला जैसलमेर रे फर्स्ट 160 किलोमीटर्स वाज फ्रॉम जैसलमेर टू लोंगेवाला is also a landmark because amaro jo border movie Longewala war major Jainpuri se mane that's the landmark location so I started from Jaisalmer
finished at Longewala War Memorial is a 160 kilometer run. I did At it the in time 20 hours. 20 hours. We started at 12 noon. 12टा राति 12टा तापरे सकाळ 8टा मु पहुंचली वॉर मेमोरियल. Constant था ना rest periods भी था? Almost constant because you have to keep moving. And if you take a rest, your time is माने तम टाइम ही चलती टाइम चलती हो. And being a competitive runner मु चाहूथली जते कम टाइम रे हो आउ केते प्लस रेस्ट नेले भी से मोमेंटम टा लूज मोमेंटम त रहि जिवो तापरे तमरो बढ़िबो पोडियम आसीबनी तमे बिकॉज़ आई ट्रेन फॉर पोडियम तो से हिसाब रे मु चाहूथली फर्स्ट सेकंड थर्ड भितरे पोजीशन आसु तो भलो हबो. सो ड्यूरिंग सी कैटेगरी रे मु सेकंड हेइथली. तो इन दी पीक समर्स माने गरम 12टा बेले जो गरम थिला तापर राति 12टा रे डिसेंबर रे जो चिल फैक्टर अछि जो राजस्थान रो डेजर्ट रे एनकाउंटरिंग दैट तो सेटा दैट इज हाउ यू ट्रेन योरसेल्फ. यू हैव टू गिव योर बॉडी एडिक्वेट रेस्पेक्ट कि मु केते पर्यंत पुश कर परिबी कोन कर परिबी ट्रेन कर परिबी नी. सो सेटा हमें करू. That is how your माने ट्रेनिंग डेफिनेटली फिजिकली हमको ट्रेन करिया डेफिनेटली दैट प्लेज अ बिगर रोल. प्लस आल्सो निज को मेंटली कहिबा बिल्कुल दैट कि मु एति के करि परिबी. You have to give yourself a goal that what अच्छी टारगेट अच्छी ए टारगेट रे तुमको 16 सप्ताह कि 20 सप्ताह रे पहुंचियार अछि. दैट इज हाउ यू बिल्ड टुवर्ड्स दैट गोल. ओके फिटनेस डेफिनेटली फिटनेस ऊपर आ ये ऊपर हमें आगु को पॉडकास्ट विषय कथा. दिस इज नॉट द लास्ट टाइम वी आर कमिंग टू दिस शो. तो आज फिलहाल पाई इन दिस एपिसोड विल close this conversation, wrap up this conversation here. And aji jehetu apna mate gote bahut curious interest dei dele because fitness is one of the interest because mu certified nutritionist to moro gote keen interest achi se ade. So jemti apna gote bahut bada katha kale je less than 1% of world's population I think marathon, absolutely marathon wala distance ko cover kari paranti. So mu ebe apna pachare lagili to because mu 5 and 10 kilometers distance I have already covered. So usually 10 kilometers रे usually mu देखी छी because mu अपन physical and mental aspects विचार पचारली माने legs last बेलू को माने thigh muscles आउ lower back they give up almost. तो it's just the mind की complete करियर अछि. We are not making to the podium you know but complete finish करियर अछि as like normally जे train right finishes medal पाई. तो but माने I never thought कि माने I'll माने podcast पाई I'll get into know about the community and right now on camera I have a goal कि I want to be that less than 1% of the world wala list by running a marathon. So this is a deal. On camera अपन कहउछंती. Okay, so thank you so much Avinash bhai, Captain Avinash for this amazing conversation. I must say ki this is one of the interesting conversation of my whole life. Kalingacast team तरफ रो आपन पे गोटे बहुत छोटो gift you can say. So this is for you. Thank you bhai Jai for the Jagannath. show and Jai Jagannath. Thank you.